Hello, and welcome back to another session on Welcome to Unacademy Empower. Uh, we will be covering ChatGPT at a beginner level, as I have mentioned before. We will today get into another section, and just to give you a little bit background about Unacademy Empower. It's a channel that's been started with Unacademy and a few of us from the product community to bring what product is and the world of product to all of y'all, to freshers and to experienced people alike, right? So do get onto YouTube, do check out the Unacademy Empower channel, and do subscribe to keep getting updates of our latest videos, right? So, ChatGPT beginner level. We are not going to get into too many technicalities and advanced, but one of the things that in this video that I will do, जो पहली वीडियोस में मैंने थोड़ा ज़्यादा थियोरी किया, मैं ये वीडियोस में अब आगे ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिकल करूँगा, जो है कि प्रॉम्प्ट्स एक्चुअली चैट जीपीटी में डाल के कैसे चलते हैं, क्या हमारी सोच है प्रॉम्प्ट्स के पीछे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे it is that practical work which is what you all are here for, right? However, the theory which I have shared in the beginning in the first couple of sessions was also very important for us to get a deeper understanding of what is it that we're going to cover. So today, in today's session, we will specifically cover research and competitive analysis. यहाँ पर काफ़ी freshers होंगे, experienced लोग भी होंगे. रिसर्च और कंपटीशन एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है कि आप कोई भी रोल अगर इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो या फिर और कोई भी इंडस्ट्री हो, समझो आप सेल्स की दुनिया में भी घुस रहे हो, तो रिसर्च और कंपटीशन एनालिसिस, कंपेटिटिव एनालिसिस तो आपको करना ही होगा. ये बहुत एक बेसिक चीज़ है. ऐसी बात नहीं है कि अगर आप मार्केटिंग स्टूडेंट हैं तभी ये करना ज़रूरी होता है. इट इज़ समथिंग विच इज़ a practical skill set which everybody should have, right? So we will get into this and spend a little time aaj on research and competition analysis and how do we use ChatGPT for it. एक चीज़ मैं बहुत जेनेरिक नहीं रखूँगा, मैं स्पेसिफिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट की दुनिया के हिसाब से एग्जाम्पल्स दूंगा, मगर हाँ, आप यही एग्जाम्पल्स को मॉडिफाई करके अपना भी बना सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम एक टच कर लेते हैं, टच अपॉन कि चैट जीपीटी के बेनिफिट्स क्या हमको मिलेंगे अगर हम वो इस्तेमाल करेंगे टू डू आवर रिसर्च एंड कंपटीशन एनालिसिस. सबसे पहले तो इट्स एफिशिएंट, राइट? इट गिव्स यू वेरी क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स दैट सेव्स यू अ लॉट ऑफ टाइम. Very often we spend a lot of time on Google search, on reading books, on reading published articles to try and find numbers, data, who our competitors are, what is the kind of things that they are creating, etc. Right? But through ChatGPT, it can be much, much faster. The other thing, जो एक benefit आपको मिलती है ChatGPT इस्तेमाल करके, कि बहुत ही आपको या तो समराइज्ड लेवल पर या फिर बहुत ही डिटेल्ड इनसाइट लेवल पर भी आपको रिसर्च डेटा मिल सकता है. आप जैसे चैट जीपीटी से बात करेंगे वो वैसे ही आपको रिस्पॉन्स देंगी. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कीप दिस इन माइंड व्हेन वी आर डूइंग आवर रिसर्च एंड कंपटीशन एनालिसिस. जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा फोकस करूंगा ये वाले सेशन में स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट स्ट्रैटेजीज थोड़ी बहुत के ऊपर, मगर मैं इसको बहुत जेनेरिक नहीं बनाऊंगा. एक और चीज, कॉस्ट इफेक्टिव है. आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन, रिच इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आपके इंडस्ट्री, कंज्यूमर्स, कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, एट्सेट्रा. इस पर मैं एक आपको टर्म्स एंड कंडीशन टाइप एक चीज मेंशन जरूर करूंगा कि चैट जीपीटी 3.5 जो फ्री है, जो सब इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री में सिर्फ लॉगिन करके, वो सिर्फ सितंबर 2021 तक का डेटा उसके अंदर होता है. ठीक है, अगर आपको अपडेटेड डेटा चाहिए
तो या तो फिर आप पहले चैट जीपीटी से इनिशियल इंफॉर्मेशन सारा लेके गूगल सर्च में जाके यू कैन आस्क फॉर द सेम इंफॉर्मेशन इन एन अपडेटेड मैनर, या फिर आप एक पेड वर्जन जो है चैट जीपीटी का वो लेके आपको थोड़ा और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल सकता है। मगर हाँ, just because it is something which is maybe up to 2021 September does not mean that it does not hold value. It gives you a lot of baseline information which you can then evolve, build on, edit, etc. Right? अब हम आते हैं स्पेसिफिकली कि हम चैट जीपीटी को रिसर्च यूसेज के लिए क्यों इस्तेमाल करें। ये एक सवाल होगा, तो उसके ऊपर थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले हम चैट जीपीटी के थ्रू जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स हैं, जो कंज्यूमर बिहेवियर्स हैं, कि नई अपॉर्चुनिटीज भी क्या हो सकती हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो क्या चाहते हैं, इन सब का इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, बिना कुछ खर्चे। सो कीप दिस इन माइंड. I think it's very, very valuable. It is something I use personally in the last few months a lot, especially when I'm trying to understand users, right? Or what the market is doing. Second, एक तो है कि हम ट्रेंड्स और पैटर्न्स क्या हैं वो पता कर सकते हैं, हमारे यूजर्स क्या चाहते हैं वो पता कर सकते हैं, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली ये हमको बहुत ही आसान तरीके से हेल्प करता है कि हिस्टोरिकल सिनारियोस हम कैसे देख सकते हैं, कि बहुत सारा अगर इंसाइट्स, बहुत ज़्यादा इंसाइट्स हैं हमारे पास, ये तो बहुत सारे घंटे, दिनों लग सकते हैं हमारे हमको कि हम इसको कैसे समझें, कि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, समझो 5 साल का, वो हम कैसे इतनी जल्दी देख पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट? चैट जीपीटी कैन हेल्प अस विद दैट वेरी वेरी क्विकली, वेरी इजीली। और थर्ड पीस है, जो प्रोडक्ट की दुनिया में अगर हमारे पास कोई एक आइडिया आ रहा है, या समझो हमने कोई सेकेंडरी डेटा देखा है, रिसर्च किया है, या कंज्यूमर से बात की है, या इंटरनल टीम से कोई सजेशन आया है, हम चैट जीपीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब आइडियाज़ को इवैल्यूएट करने के लिए, राइट? कि एक तो चैट जीपीटी बता सकता है कि फीडबैक देके कि ये आइडिया का प्रोज एंड कॉन्स क्या है, राइट? सजेशंस कि इसको हम इम्प्रूव ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कहाँ पर हम इसको डालें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस पर भी हम थोड़ा और एक और सेशन में आगे हम बात करेंगे, जहाँ पर हम यूज़र अंडरस्टैंडिंग में एक अलग सेशन करेंगे, उसमें ये हम ज़्यादा डीप डाइव करेंगे। अब आते हैं दूसरी पीस पर, जो है कंपेटिटिव एनालिसिस। तो एक हो गई जो रिसर्च यूसेज के लिए, एक हो गई कंपेटिटिव एनालिसिस। अब देखिए, ये दोनों चीज़ बहुत तरीकों से एक है, मगर इनमें थोड़े फ़र्क भी पड़ जाते हैं। जब हम रिसर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये दोनों कवर करें, दोनों को समझें, दोनों को एक साथ आगे बढ़ाएं, राइट? So what are the things under competitive analysis that are important for us? One is you can very easily identify who your competitors are. आपको बहुत ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, आप जल्दी से पता कर सकते हैं और इंटेलिजेंटली चैट जीपीटी आपको ये आंसर दे देगा। सेकंड, जब आपके कंपेटिटर्स का इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया, आप सिंपली चैट जीपीटी से बात करके पूछ सकते हैं कि आप मेरे को एक ऑफरिंग्स के हिसाब से एक लेवल पर मेरे को समझाइए कि उनकी क्या ऑफरिंग्स हैं, हमारी क्या ऑफरिंग्स हैं, क्या मिसिंग है। समझो अगर 5 कंपेटिटर्स हैं इंक्लूडिंग अस, कौन सी कंपनी क्या ऑफर करती है, क्या नहीं करती है, आप ये चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट करते हैं और ये हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स में, राइट? थर्ड है कि हम अपनी ब्रांड पोजीशनिंग, हमारी यूएसपी क्या है, मार्केट में हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये सब हम चैट जीपीटी से पता कर सकते हैं। फिफ्थ, वी कैन ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम, राइट? नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंट, द मार्केट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, आवर कंपेटिटर्स आर ऑलवेज इवॉल्विंग,
right? So it's important, like we mentioned in research usage, about understanding historical trends. Similarly, in competitive analysis, we need to constantly keep monitoring, right? And we need to constantly iterate. Iterate mane we need to learn and evolve and adapt and change, right? So this is something which we need to do over a period of time. And I think that it's very important as a fourth factor for competitive analysis as a benefit. Okay? इस पर अगर आपके पास रिसर्च यूसेज या कंपटीशन एनालिसिस पर अगर ये सेशन देखने के बाद आपको कोई सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट्स में डालिए और पूछिए। हम अनअकैडमी और हम जो प्रोडक्ट कम्युनिटी से जो आए हैं ये चैनल पर आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। We'll help you out to better understand because that is the purpose of this channel. So look forward to your comments. Right? So we'll take now a few examples, and first what I will do is I will run through the prompts over here in front of you on the slide, very briefly explain each one of them, and then we will take it into ChatGPT to see what is the kind of responses that ChatGPT gives us. Okay? So for the first piece, what we will do is try and understand trends and history, and we will take Airbnb as an example of a sample of a company. Everybody knows about Airbnb, so we'll take something which is common and popular, right? So for the first prompt, simple question, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, who are Airbnb's 5 biggest competitors? उनकी की पोजिशनिंग क्या है, उनकी यूएसपी क्या है in comparison to others, right? This is very self-explanatory, and I'm sure at any point, irrelevant of whether you're a student studying for some competitive exam or whether you're an experienced professional in some domain, some function, some industry, these are questions which come in front of you very, very often, right? Second prompt, we'll go a little deeper, right? Where we will ask ChatGPT if it can show us the demographic data of who are the type of people using Airbnb, right? So do a competition analysis on the competitors, and we'll give a little more detailed instruction towards what is the strengths, weaknesses, opportunities, right? And threats. SWOT analysis bhi aap bol sakte hain instead of listing it out. But we'll also ask pricing, technology, market size, brand awareness, etc. And फिर हम ChatGPT को एक additional instruction यहाँ पर देंगे, right? Which is to say that give us this information in a table format. ये important हो जाता है जब आप ChatGPT को काफ़ी detailed information मांगते हैं, और अगर आप ये tabular format में नहीं मांगेंगे तो बहुत सारा information जैसे एक written word doc में आ जाएगा, and it will be difficult for you to consume and compare and analyze and make decisions, right? So in the first couple of videos, we didn't get into a lot of these fine factors of how to use ChatGPT, which we will do going forward, right? Prompt 3, जो हमने बोला एक historical background क्या है, एक है trends, एक है basic competition, एक है competitive analysis, एक है इसमें से trends और insights आपको क्या मिलेंगे, और एक है कि history क्या है, इसमें शुरू कहाँ से हुआ, इसमें key figures जो stakeholders हैं वो कौन हैं, उनकी क्या contributions रही हैं, और how have these factors influenced Airbnb the way it is today. अब ये सवाल important क्यों हो जाता है? This is not so much a question about whether it will add to your competition analysis, but very often this is very good data for you to have when you are interviewing, right? Say it's not necessary that you're interviewing at Airbnb, but in product management interviews you may be given certain scenarios where you use Airbnb as an example
to solve a problem statement being given to you, right? Whether Airbnb is given to you or a more general one is given and you use Airbnb. Like, for example, in the world of AI today, when you interview, you may be asked, pick an industry where we can sit and deep dive on how AI can change the way it is today. So you might say that I want to take the hospitality hotel industry and I'll take Airbnb. Having this information of who the figures are, the milestones kya hain, what are the things which have brought about Airbnb the way it is today is very, very useful. The next one is for the future. What are the latest and anticipated future developments or trends related to Airbnb? Similar to the point that I raised about AI and how it's going to evolve Airbnb, right? So this is that. अब जैसे हमने बात की, हम ये प्रॉम्प्ट्स लेंगे और इसको हम चैट जीपीटी में ले जाके एक बार देख लेंगे यही वीडियो में कि हमको कैसे रिस्पॉन्सेस मिलते हैं. So let's, while there are 4 prompts here, let us just set up a ChatGPT with a precursor, meaning कि हम ChatGPT को थोड़ा बता देते हैं कि हम आपसे इस बारे में बात करने वाले हैं. अगर आपने देखा होगा पिछले वीडियोस, तो हमने इतना ये प्रिपरेशन नहीं किया था. अब जैसे मैंने बोला, इन दीज नेक्स्ट फ्यू वीडियोस, as we are going to get and spend more time on prompts, it's important to understand how these things help. So I am basically putting down this to ChatGPT to say that, hi, this is what I'm going to talk to you about. Tell me if you've understood and can we start? So immediately response aa gaya ki I've understood. I'll ask you any questions I may have. So let's get started. So हम पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, अब इसको थोड़ा हम रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं. तो एक चीज जैसे मैंने आपको बोली कि चैट जीपीटी 3.5 जो है वो सितंबर 2021 में उसका लास्ट अपडेट था. तो वो आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ तब तक का दे सकता है, तो वही बता रहा है और आपको बोल रहा है तब तक का इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके ये 5 मेरे एयरबीएनबी के मेन कंपेटिटर्स थे. Booking.com, VRBO, Expedia, TripAdvisor, and Agoda. And what are these individual organizations or competitors? वो भी एक summary lines लिखी हुई है. अब हमने पूछा कि
ये वाले में Airbnb का पोजिशनिंग और यूएसपी इन कंपैरिजन टू देम क्या है। तो फिर वो वही बता रहा है कि Airbnb का जो एक यूएसपी आ जाता है कंपेयर्ड टू दीज अदर 5, कि एक तो पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म है, एक ऑथेंटिक और लोकल एक्सपीरियंसेस देता है, बहुत ही अलग तरीके के प्रॉपर्टी टाइप्स देता है, होस्ट और गेस्ट का इंटरैक्शन रखता है, और एक सेक्शन है इन अकोमोडेशंस के अलावा जहां पर Airbnb एक्सपीरियंसेस ऑफर करता है, जो लोग वहां पर जहां रह रहे हैं वहां के लोकल से स्पेशल events, etc. Right? So, this is what the answer to the question came. Very simple, very clear. Right? Now, we'll take the second one. So, what I want you to see here is the difference between the first answer and the second answer in terms of format and structure. आपने जैसे ही बोला ChatGPT को कि मेरे को ये टैब्यूलर फॉर्मेट में दो, इंफॉर्मेशन मैंने ज्यादा मांगी है मगर मैंने टैब्यूलर फॉर्मेट में मांगी है, हाउ इजी इट इज फॉर अस टू कंज्यूम इट, टू रीड इट, टू अंडरस्टैंड इट, राइट? बहुत ही सिंपल तरीके से ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है, राइट? जो आपके कंपटीशन एनालिसिस करने थे और वो उनके पैरामीटर्स क्या थे, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, प्राइसिंग, मार्केट साइज, यूज केसेस, सॉफ्टवेयर, एटसेट्रा, सारा इंफॉर्मेशन समराइज्ड वर्जन में एक आपको टेबल फॉर्मेट में एक एक्सेल बॉक्स में मिल गया है, राइट? नाउ दिस इज वेरी वेरी यूजफुल वेयर इट इज नॉट ओनली कि ChatGPT आपको बस एक लंबा सा आंसर देगा लाइक अ वर्ड डॉक्यूमेंट जहां पर कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, राइट? इट इज ऑल अबाउट हाउ यू टॉक टू ChatGPT. बट यस, इसमें लिमिटेशन एक है कि ChatGPT विल नॉट जनरेट इमेजेस फॉर यू, राइट? Neither can you give ChatGPT a link of a Word document and say, analyze this and give me feedback. You have to talk and take information from ChatGPT, right? Let's go to the next prompt. सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। अब हम इस पर एक चीज ट्राई करते हैं, राइट? वी से कैन यू गिव मी दिस इंफॉर्मेशन in a timeline format. यहाँ पर आपको ईयर बाय ईयर दिया है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स, बट मैं ये पूछ के समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ChatGPT मेरे को सारा कुछ ये जो इंफॉर्मेशन है अभी ये वाले प्रॉम्प्ट का एक टाइमलाइन फॉर्मेट में दे सकता है या नहीं।
ये आपको मिल गया। जैसे ये भर रहा है, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब आप ये एडिशनल एक रूल देते हैं या प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, you should keep in mind that it is very possible that some data between the first version that you had before this prompt and this version, there will be a difference. There will be a difference of data. Something may be added, something may be subtracted. So it is up to you, the human, the reviewer, to go through both and see whether something like this has happened or not, and what you want to keep and what you want to remove. हम एक और चीज इस पर ट्राई करते हैं. Why not ask ChatGPT, please translate this into a tabular format. अब ये जैसे रिस्पॉन्स बनाता है, मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा. आपको बहुत सारे चीट शीट्स मिलेंगे. लिंक्डइन पर जाएंगे या गूगल पर सर्च करेंगे. चैट जीपीटी से भी आप पूछ सकते हैं कि गिव मी द बेस्ट प्रॉम्प्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज दैट आई वांट टू डू. I'll be very honest with you, having experimented and spent a lot of time on ChatGPT. Take all that information, right? But experiment yourself. Nobody out there will be able to give you 100% method as to how best to use this for you. Take guidelines, take this video for example, learn from it, experiment on ChatGPT, it's free, and develop your skill set of how you go about it and what is it that you find, right? Let's take the last one. So this is the response that it's giving you to your last question, right? And as you see the video, the prompts are available on the slides. I've taken you through them. Experiment yourself. Replace Airbnb with maybe you want to do Hyatt, for example, right? Or ITC. You want to change the industry completely and say Apple iPhones, right? Experiment and see what happens, right? So I've given you a practical example using Airbnb. What I will do is, let's go back to the deck. So we've gone through these 4 and seen how it works practically on ChatGPT also. I did not spend a lot of time going through the details of the responses because I'm sure you all can do that by yourselves. What I wanted to talk about is how does it show up? What are the additional rules that you can apply? What are things that you should think about and be careful about, right? Let's take another example, right? And we'll keep it on the deck. So there is this newsletter that I follow called Hello PM, fantastic information. So I've taken these prompts from Hello PM for idea testing. Let's go through the prompts for a second. So the first part was research and competition analysis. This is for idea testing. So what he talks about is, let's take an example of a music streaming app for people who regularly visit the gym. Who are the competitors?
and their value propositions, weaknesses, etc. Please put it in a tabular format. Second prompt, what is the addressable market size, right? So it could be that through these prompts, what he's also trying to handle and solve for is maybe a pitch deck. Pitch deck, for people who don't know, is something that you can use to take to investors to get them to invest in your company. Yeah. Third one is use the information I am giving below and tell me the pros and cons of using this product. So let's say music streaming app you want to use for people who regularly visit the gym. Let's see, I use Spotify, right? And there are people I know who use Amazon Music. There are people who use YouTube Music. There are people who use Ghana, right? I mean, there are many like that. And there are people who create their own playlists and play that, correct? So what you can do is, for prompt 3, go to any website, or we can try a prompt right now and just name a few of these apps and see what response comes out. So prompt 4 is where specifically, and these are marketing terminologies. I hope most of y'all will know. If y'all don't, just read up about them. And it's available in Philip Kotler's books and online. So it says perform a SWOT, which is strengths, weaknesses, opportunities, threats, a PESTLE and Porter's 5 force analysis on Amazon Music and YouTube Music, and share in a tabular format. So let's try these out and see what happens, right? So similar thing, just a little different wording. And here's your answer, right? If you remember, I mentioned Spotify, I mentioned Amazon Music. It's not got YouTube Music here. You can always give it instructions that use these as my competitors if you want. Yeah. Let's go to prompt 2. So what you will see is that while you've asked for a total addressable market, right, it's given you the breakdown in the different subcategories and segmentations and what the go-to market for each of these are. Say gym goers के लिए ये होगा, home workouts के लिए ये होगा, personal trainers के लिए ये होगा, etc., etc.
It said it's essential to conduct thorough market research to quantify the size of each, right? Uh, it's not giving you a number, a numerical as of now. So let's try something. Can you give me a numerical estimated value for all the above segments in terms of number of possible users? See, and it's coming back to you with the same, that it's not going to be able to give you that. Yeah. Because, and its main reason it's giving you is I have limited data. Real-time data I don't have. Let's try once more. And here, right? What I wanted to show you here, and these are very, very broad estimates, right? And this is not recent data. But what I wanted to show you is for 2 prompts, 2 to 3 times, ChatGPT did not willingly give you a value, right? So what you need to do is to give ChatGPT the parameters to use to be able to give you that value. Do you see, right? So you're telling ChatGPT it's okay, give it to me till 2021, till when you have data, and base it on global population sizes. So basis that, it has given you this. Okay. There also, it's not got any numerical data for sports teams or corporate wellness programs, right? So I wanted to take this example, and of course there are 2 more prompts here, so let's just use those. But I was using that example to show you how you need to learn to speak to ChatGPT, right? It's like learning to have a conversation with somebody new. It's just as simple as that. So I made an error here, right? I just copy pasted and I didn't give specific instructions. So let's edit. Let's remove this. And see what happens. And because you didn't give specific information about your product, right? It has given you the information, but with that condition that I can't make a direct comparison, but I can give some general pros and cons for apps, music apps designed for gym goers in comparison to Spotify, right? And it gives you that information for you to review, for you to understand, and for you to move forward on. Let's try the last prompt. And you'll see the difference here because
the prompt that you've given, which is perform SWOT, bestseller, and POTUS 5 on Amazon Music, YouTube Music, and given a tabular format, is very, very clear, concise, direct, with specific information, right? And that's the answer you will get back. Yeah. So this is for us, these 4 prompts. Thank you to the Hello PM team, where these are 4 prompts that they shared where we can use to test our ideas and what the market is about and how the market may react, right? So we've covered this, and now we're going to just wrap up. I think it's very important that as a wrap up, we keep in mind certain key limitations that ChatGPT has, right? One is data accuracy. While you take the information, always validate it, as there are chances of inaccuracy in the analysis and in the conclusions, right? Language barriers. So while ChatGPT does help to some extent in terms of interlanguage, it still is relatively limited today. That's one area where I feel personally, right, my opinion, that where Bard will move ahead very, very quickly, right? And do keep in mind something that I have mentioned in previous videos, and I'm mentioning it again, is that ChatGPT is not a replacement, right? It's not a replacement for you to just, take everything from it without reviewing, without thinking, without validating. It's not a replacement to talking to your users, to using your own expertise that you have, right? And using your stakeholder management skills. So there is a lot of talk about how AI will take over, and there will be a lot of loss of jobs. And there is some truth to that. In one of my future videos next week, I will talk about this whole debate that is going on. But very honestly, I think it comes down to how do you use something like ChatGPT, which is an AI tool, and you build your skill sets around it, right? And how do you use it to improve yourself and improve the work that you do? Yeah. So on that note, thank you very much. This was an amazing session for me where I got to share with you my thoughts, prompts, ideas about how to use ChatGPT for research and for competitive analysis. Thank you very much. Have a great day.